अब आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और वो है आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब कई बार क्या होता है, कई बार हम एक सर्कल का इक्वेशन लिखने के बजाय एक पूरे फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिखते हैं जिनका कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स में बात करें तो पहला है फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो सपोज हमको एक सर्कल दिया है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सर्कल ये है, इसका सेंटर है -g - f। अब ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे जो कि इसके कॉन्सेंट्रिक होंगे। तो उन सारे सर्कल्स के लिए सेंटर सेम रहेगा -g - f, सिर्फ रेडियस चेंज होगा। तो इस तरह के सर्कल्स को हम बोलेंगे फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे जो लैम्डा है वो पैरामीटर है। तो g और f सेम रहेंगे क्योंकि सारे सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, सिर्फ उनका रेडियस बदलेगा और वो रेडियस बदलेगा ये लैम्डा से। तो कभी भी आपको एक ऐसा सर्कल चाहिए जो कि दिए हुए सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है, तो सीधे वो सर्कल का इक्वेशन ले लो और उसमें कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस कर दो एक पैरामीटर से, जो कि यहां पे हमने लैम्डा के जैसे लिया है। तो पहला है फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दूसरा है हमारा वो केस फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through points of intersection of two given circles। अब हमें दो सर्कल्स दिए हैं और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो सपोज ये है s इक्वल्स टू 0 और ये है आपका s डैश इक्वल्स टू 0। अब s है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और s डैश है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल 0। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकता है। तो इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे जो इनके इंटरसेक्शन से पास करेंगे। तो उस तरह के जितने भी सर्कल्स हैं उनको हम लिख सकते हैं s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r -1। अब यहां -1 नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे फिर रेडिकल एक्सिस आ जाएगा, सर्कल नहीं बनेगा। तो ये है s प्लस लेमडा s डैश इक्वल 0 और इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस लेमडा इंटू इक्वेशन 2। तो इसको डायरेक्टली लिख सकता है 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर प्लस 2 g1 प्लस लैम्डा g2x प्लस 2 f1 प्लस लैम्डा f2y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल्स 0। और यहां पे अगर एक और कंडीशन मिल जाएगी तो ये फैमिली में से हम कोई भी रिक्वायर्ड सर्कल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही अननोन है, एक ही पैरामीटर लैम्डा, उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए। तो दुनिया के सारे सर्कल्स जो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं वो आएंगे आपके s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0 से, जहां पे लेमडा कोई एक रियल नंबर है सिवाय -1 के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
passing through the point of intersection of two given circles and passing through this point. अब हमको एक सर्कल निकालना है जो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन निकालेंगे। तो हम निकालेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन जो ये दोनों सर्कल्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। अब हमको पता है ये इक्वेशन होता है एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल 0। अब यहां पे एस है, ये पहला सर्कल जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 और प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स 0। तो ये इक्वेशन दुनिया के हर उस सर्कल का इक्वेशन है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। अब उन सारे सर्कल्स में से हमको वो सर्कल निकालना है जो कि इस पॉइंट से भी पास करता है 1, 2 से। तो हमारा जो सर्कल है वो 1, 2 से पास करता है। तो यानी इसका मतलब उसकी इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स और वाई का वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 7 प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल 0। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 और प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3 लेमडा इक्वल 0। तो यहां से लेमडा का वैल्यू आपका -2। तो ये फैमिली में से वो सर्कल जो इस पॉइंट से भी पास करता है वो तब आएगा जब पैरामीटर का वैल्यू -2 है। तो अपने क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू -2 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7 एंड देन -2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कितना -6x प्लस 2x, तो -4x प्लस 4y प्लस 3y प्लस 7y, और ये -7 प्लस 2 -5 इक्वल्स टू 0। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन आएगा वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स 0। तो इस तरीके से हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। Now here the question is, we need to find the equation of a circle through the point of intersection of two given circles and cutting this third circle orthogonally. Now what we'll do is, first we'll find equation of family of circles passing through point of intersection of two given circles, and we know that this equation is given by s1 plus lambda s2 equals 0. So it will be this x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 plus lambda x square plus y square plus 6x plus 4y minus 12 equals 0. So we can write this as 1 plus lambda x square 1 plus lambda y square and then plus 6 lambda minus 4x plus 4 lambda minus 6y and then minus 12 1 plus lambda equals 0, or we can write this as x square plus y square plus 2 into 3 lambda minus 2 upon lambda plus 1x plus 2 into 2 lambda minus 3 upon lambda plus 1y and minus 12 equals 0. Now this circle, it is orthogonal to this other circle, which is x square plus y square minus 2x minus 4 equals 0. Now for this circle, g1 is 3 lambda minus 2 upon lambda plus 1. f1 is 2 lambda minus 3 upon lambda plus 1, and c1 is minus 12. And for this second circle,
G2 is -1, F2 is 0, and C2 is -4. Now we know that condition of orthogonality is 2 G1 G2 plus F1 F2. It must be equal to C1 plus C2. So it will be 2, and G1 G2 is 3 lambda minus 2 upon lambda plus 1 into -1, and this F1 F2 it is 0, and this is equal to C1 plus C2, which is -16. Now this minus and minus will cancel, and it will be this 8. So we can write this as 3 lambda minus 2 will be equal to 8 lambda plus 8. From here we'll get the value of lambda as -2, and if we put the value of lambda in this equation, we'll get equation of the circle. So it will be this x square plus y square, and here will be this -6 -2 -8 -16, and -16 upon -1, so it will be this 16x, and here will be this -4 -3, and then into 2 upon -1, so that will be 14y minus 12 equals 0. And that is the answer to this question. तीसरा है आपका family of circles passing through intersection of a given circle and a given line. तो यहां पे हमें एक सर्कल दिया है और सपोज इसका इक्वेशन है s इक्वल्स टू 0, और हमको एक लाइन दिया है और इसका इक्वेशन है l इक्वल्स टू 0. अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं. तो वो जो सारे सर्कल्स हैं वो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन आता है आपका s प्लस लेमडा l इक्वल्स 0 से. तो जैसे अगर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 है, और लाइन का इक्वेशन lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन है वो आएगा s, जो कि है इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और प्लस लेमडा, और ये लाइन का इक्वेशन lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, जहां पे लेमडा एक पैरामीटर है. और क्योंकि एक ही पैरामीटर है तो अगर एक कंडीशन मिल जाए तो वहां से आप कोई भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सर्कल इस फैमिली से निकाल सकता है. चौथा है फैमिली ऑफ सर्कल्स touching a given circle and a given line at the point of contact. तो यहां पे हमें एक सर्कल दिया है और ये है s इक्वल्स टू 0, और एक लाइन दिया है जो कि इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करता है. अब हमको वो सारे सर्कल्स का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन को और इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करता है. तो इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे. तो इस केस में भी जो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन आता है वो आता है आपका s प्लस लेमडा l इक्वल्स 0. यहां पे फिर से लेमडा कोई एक पैरामीटर है.
तो अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो सर्कल का इक्वेशन है s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0। और अगर एक सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका इक्वेशन है s प्लस लेमडा l इक्वल 0। और अगर सर्कल और लाइन टच करते हैं तो ऐसे सर्कल्स जो इन दोनों को टच करेंगे सेम पॉइंट पे तो वो है s प्लस लेमडा l इक्वल्स 0। अब अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। Now the question is, we are given equation of this variable circle which depends on k. It says it passes through the same 2 points for every real number k. First question is, find the coordinates of these 2 points. What we'll do is, we'll rewrite this equation and we'll write this equation as x square plus y square and then plus y minus 1, and we'll take all the terms containing k together. So it'll be this k into x plus y minus 1 equals to 0. Now basically this equation is s plus k l equals 0, where s is this circle and l is this line. This is equation of family of all circles which pass through intersection of this circle and this line. So all the members in this family, they'll pass through these two fixed points which are basically intersection of this circle and line. So equation of this circle is x square plus y square plus y minus 1 equals 0, and equation of this line is x plus y minus 1 equals 0, and we have to find that point of intersection. So what we'll do is we'll put the value of x. So here will be this y minus 1 whole square plus y square plus y minus 1 equals 0. So it will be this y square minus 2y plus 1 plus y square plus y minus 1 equals 0. Now this minus 1 plus 1 will cancel. So we'll get this as 2y square minus y equals 0. That is either the value of y is 0 or value of y is 1 by 2. Now we put y as 0, we'll get x as 1. So one of the fixed point is 1 comma 0. And the other fixed point is when the value of y is 1 by 2. If y is 1 by 2, x is also 1 by 2. So it will be just 1 by 2 comma 1 by 2. So these are the coordinates of two fixed points. Now the second one is minimum value of radius of circle. So the circle with minimum radius will have these 2 points as ends of diameter. So radius of such circle will be given by 1 by 2 into distance between these 2 points. So 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So it will be this 1 by 4 plus 1 by 4, and it is 1 upon 2 root 2. So the minimum value of radius of this circle C is 1 upon 2 root 2. And it says find the condition that the 4 points in which these two circles are intercepted by straight lines ax plus by plus c equals 0 and a dash x plus b dash y plus c dash equals to 0 respectively lie on and the circle. Now we have this first circle and this first straight line. So if we write equation of all the circles which pass through intersection of this circle and line, it will be given by s plus lambda l equals 0. So here will be this x square plus y square plus ax plus by plus c plus lambda ax plus by plus capital C equals 0. We can also write this equation as x square plus y square, and this is a plus lambda ax plus b plus lambda capital by plus c plus lambda capital C equals 0. And the same way, equation of all the circles which pass through intersection of this circle and this line will be given by s plus lambda dash l equals 0. So that equation will be x square plus y square plus a dash x plus b dash y plus c dash plus lambda dash a dash x plus b dash y plus c dash equals 0. Now we can rewrite this equation as x square plus y square plus a dash plus lambda dash a dash x
प्लस बी डैश प्लस lambda dash b dash y and plus c dash plus lambda dash capital C dash equals 0. Now it says we have to find the circle which passes through all these 4 points. So basically there'll be this one circle which will satisfy both the equation, and for that circle these two equations they'll be same, and these two equations they'll be same if a plus lambda a upon a dash plus lambda a dash will be equal to b plus lambda b upon b dash plus lambda dash b dash will be equal to c plus lambda c upon c dash plus lambda dash c dash, and this is equal to 1. Now from this first equation we can write lambda a minus lambda dash a dash plus a minus a dash equals 0. In the same way we can write lambda b minus lambda dash b dash plus b minus b dash equals 0, and here we'll have lambda c minus lambda dash c dash plus c minus c dash equals 0, which are basically 3 linear equations. Now such a circle is only possible if these 3 lines they are concurrent. So these 3 lines they must be concurrent, and they are concurrent if determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 is 0. So from here we can write determinant a b c a dash b dash c dash a minus a dash b minus b dash and c minus c dash, it must be equal to 0, and that is the answer to this question. अब पांचवा है इसमें हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स. अब यहां पे हमको 2 पॉइंट्स दे देगा, सपोज ए x1 y1 और b x2 y2, और ये कहेगा वो सारे सर्कल्स का इक्वेशन निकालिए जो कि ये दोनों पॉइंट से पास करते हैं. तो इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे. तो अब हमको वो सारे सर्कल्स का इक्वेशन लिखना है जो ए और बी से पास करते हैं. अब इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे ये दोनों पॉइंट से ये लाइन हमारे पास आ जाएगा, तो ये है L इक्वल्स टू 0. अब अगर एक सर्कल और हो जो ए और बी से पास करता है, तब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0. और हमको पता है बहुत सारे सर्कल्स में से एक ऐसा सर्कल होगा जिसके लिए ए बी डायमीटर है, तो हम इस केस में S इक्वल टू 0 वो सर्कल चूज करेंगे जिसके लिए ए बी डायमीटर है. तो अब हमारे पास सर्कल है और लाइन है, तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0. अब डायमीटर की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये सर्कल को लिखेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 और प्लस लैम्डा L. ये लाइन का इक्वेशन, तो ये लाइन का इक्वेशन या तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं. तो ये अगर है x y1, ये हो जाएगा x1 y1 1, और ये हो जाएगा आपका x2 y2 1 इक्वल 0, और यहां पे फिर से लैम्डा आपका एक पैरामीटर है. तो सारे सर्कल्स जो कि ये दोनों फिक्स पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से पास करते हैं, उनका इक्वेशन आएगा S प्लस लैम्डा L इक्वल्स 0. तो यहां पे सर्कल और लाइन दिया नहीं था, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस से एक सर्कल चूज कर लिया, और वो एक सिंपल सर्कल है जिसके लिए ए बी डायमीटर है, और अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो लाइन निकालना तो सिंपल है. तो यहां से हम ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज
Consider a family of circles passing through two fixed points and show that the chords in which this circle it cuts the member of the family are concurrent at a point, and we also have to find coordinate of that point. Now what we can do is we can write equation of family of circles passing through these 2 points, and we know that this is given by x minus 3 into x minus 6 plus y minus 7 into y minus 5 plus lambda, and this is x y1, this is 371 and 651 equals 0. Now we can write this equation as x square plus y square minus 9x minus 12y, and this is 18 plus 35, 53 plus lambda, and there will be 2x, and then it will be plus 3y minus 15 minus 42, and that will be 27 equals 0. Now we have to find equation of chord of intersection, and we know that it is nothing but radical axis. So we have to find radical axis of two circles. One of the circle is this given circle, and the other circle is x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equals 0. Now this is a radical axis. It will be given by s1 minus s2 equals 0. So now we can write this as minus 5x minus 6y plus 56 plus lambda 2x plus 3y minus 27 equals 0. Now if we look at this equation, it is L1 plus lambda L2 equals to 0, which is family of lines passing through point of intersection of two given lines. So basically all the members in this family will pass through intersection of these two lines. So that fixed point is point of intersection of two lines. So we have to find 5x plus 6y equals 56 and 2x plus 3y equals 27, the point of intersection. So we'll multiply it with 2 and then we'll subtract it. So it'll be this 4x plus 6y 54, and if we subtract this second from first, we'll get x equals 2, and if we put x as 2, this is 4, 27 minus 4 is 23, so y is 23 by 3. So this fixed point, it is 2 comma 23 by 3, and that is the answer to this question. Now the question is, it is given that two circles, both of which pass through the points 0 comma a and 0 comma minus a and touch the line y equals mx plus c, will intersect orthogonally if c square equals a square into lambda plus m square. We have to find the value of lambda. Now basically both the points, they lie on y-axis. One of them is 0 comma a and the other one is 0 comma minus a, and equation of y-axis is x equal to 0. Now we find family of all the circles which passes through these two fixed points, and it is given by x square plus y minus a into y plus a plus lambda x equals 0. So this equation will be x square plus y square plus lambda x minus a square equals 0. So this is the equation of family of all the circles which pass through these two fixed points. Now center of the circle is at minus lambda by 2 comma 0, and its radius is under root of lambda square by 4 plus a square. Now since this circle, it touches this line mx minus y plus c equals 0, that means perpendicular distance from center must be equal to its radius. So we'll get minus m lambda by 2 plus c
upon under root of 1 plus m square, and it will be equal to under root of lambda square plus 4a square by 4. Now if we square it, we'll get this as minus m lambda plus 2c whole square. Now this 2 and 2 will cancel, and will be this 1 plus m square into lambda square plus 4a square. Now we can write this as m square lambda square plus 4c square minus 4 mc lambda, and that will be equal to lambda square plus lambda square m square plus 4a square into 1 plus m square. Now here m square lambda square will cancel. Now we can write this as a quadratic equation in lambda. So there will be lambda square plus 4 mc lambda and plus 4 a square 1 plus m square minus 4c square equals 0. Now we need two such circles. So the two parameters are lambda 1 and lambda 2, and the value of and product of roots, which is lambda 1 into lambda 2. It is given by c by a. So there will be 4 a square 1 plus m square minus 4c square upon 1. So this is our first equation. Now it says both the circles, they intersect orthogonally. Now equation of two circles is x square plus y square plus lambda 1x minus a square equals 0, and x square plus y square plus lambda 2x minus a square equals to 0. Now these two circles, they intersect orthogonally. So that means 2 times g1 g2, and g1 is lambda 1 by 2 and g2 is lambda 2 by 2 minus f1 f2, that is equal to c1 plus c2. So that will be equal to minus 2a square. Now 2 and 2 will cancel, so we'll get lambda 1 into lambda 2 as minus 4a square. Now we'll put the value of lambda 1 into lambda 2. So there will be this 4a square 1 plus m square minus 4c square, and that will be equal to 4a square. Now this 4 and 4 will cancel. We'll get this as c square equals a square, and this is 2 plus m square. Now we compare it with the given condition. That means value of lambda, it must be 2. So answer to this question is value of lambda is 2, and that's your option B. Now here the questions. Let A and B be 2 points and C be a given circle. The chords in which this circle C cuts the member of family S of circle passing through A and B are concurrent at this point. Now first we have to find equation of family of circles passing through these 2 points. Now we know that this family S equal to 0, it is given by x minus 3 into x minus 6 plus y minus 7 into y minus 5 plus lambda xy1 371 and 651 equals to 0. So this equation will be x square plus y square minus 9x minus 12y 53 plus lambda, and this is 2x plus 3y minus 27 equals 0. So this is the equation of family of circles passing through 2 given points. Now it says the chord in which this circle cuts this family. So we have to find the equation of common chord, and we know that equation of common chord is given by radical axis. So this equation will be this s minus c equals 0. So if we subtract it, so we get x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equals to 0, and it will be this minus minus plus plus and plus x square y square will cancel. So we'll get this as minus 5x minus 6y
plus 56 plus lambda 2x plus 3y minus 27 equals to 0, which is L1 plus lambda L2 equals to 0, which is family of lines passing through point of intersection of L1 and L2. So all these lines, they'll be concurrent at point of intersection of these two lines. Now we can write this line as minus 5x minus 6y plus 56 equals 0. And here we'll multiply everything with 2. So we'll get 4x plus 6y minus 54 equals 0. Now if we add them, we'll get minus x plus 2 equals to 0. So value of x is 2. And if we put x as 2, it'll be minus 10, 46. 46 upon 6 is 23 by 3. So coordinate of y is 23 by 3. So answer to this first question is this option B, 2, 23 by 3. That says equation of member of family of circles S that bisect the circumference of C. Now, if a circle bisects the circumference of another circle, then basically their common chord will pass through center of the circle. Now we know that this is your equation of common chord. Now since it bisects this given circle, this common chord will pass through center of the circle, which is at 2, 3. So we'll put x as 2 and y as 3 to find the value of lambda. So if we put x as 2 and y as 3, we'll get minus 10 minus 18 plus 56 plus lambda 4 plus 9 minus 27 equals 0. Now this is 28 and plus lambda, and this is minus 14 equals 0. That means value of lambda is 2. So we put lambda as 2. We get equation of this circle as x square plus y square minus 9x minus 12y plus 53 plus 4x plus 6y minus 54 equals 0, or it will be this x square plus y square minus 5x minus 6y minus 1 equals 0. So it will be x square plus y square minus 5x minus 6y minus 1 equals to 0, and that's your option C. And this third question is, if O is the origin and P is center of C, then absolute value of difference of squares of lengths of tangents from A and B to the circle is equal to what? So we have this circle. C. Now center of the circle is at P, and we have 2 points, say A and B. Now this is tangent drawn from A, and that is tangent drawn from B. Now suppose this point is Q and this is R. Now this is say L1 and this is L2. Now we know that AP square, it is equal to R square plus L1 square, and the same way we can write BP square as R square plus L2 square. Now we subtract them, we can write AP square minus BP square mod will be equal to mod of L1 square minus L2 square. Now L1 square minus L2 square is absolute value of difference of squares of length of tangent, which we need to find in this question, and it is equal to mod of AP square minus BP square. That means answer to this third question is this option C. Now here the question is, we are given 2 points P and Q and 2 circles are drawn through these points touching the axis of Y. Now what we'll do is, we'll first write equation of family of circles passing through 2 given points. And this equation, it is given by x minus a into x minus 4a plus y minus 5a into y minus a plus lambda, and this is
x, y, 1, and this is a, 5a1, and this is 4a, a1, and it is equal to 0. Now we simplify this, we'll get this as x square plus y square minus 5ax minus 6ay plus 9a square plus lambda 4ax plus 3ay minus 19a square equals 0, and we'll take this a with the constant, so we can write this equation as x square plus y square minus 5ax minus 6ay plus 9a square plus lambda, and this is 4x plus 3y minus 19a equals 0. Now from this family of circles we need to find a circle which touches y-axis. Now if it touches y-axis, then y-axis intercept is 0. So what we'll do is we'll find its point of intersection with y-axis, and for y-axis we'll put x as 0. Now if we put x as 0, we'll get this equation as y square minus 6ay plus 9a square plus 3 lambda y minus 19a lambda equals 0, or we can write this as y square plus 3 lambda minus 6ay plus 9a square minus 19a lambda equals 0. Now since it touches y-axis, there should be only one point of intersection, and if a quadratic equation has only one solution, that means value of d, it must be 0. So we'll get 3 lambda minus 6a whole square minus 4 into 9a square minus 19a lambda, it should be equal to 0. So we simplify this, we'll get this as 9 lambda square 36a square 36a lambda minus 36a square 76a lambda equals to 0. Now this 36a square will cancel. We'll get this as 9 lambda square plus 40a lambda equals to 0. So value of lambda is either 0 or it is minus 40a by 9. Now if we put lambda is 0, then one of the equation is x square plus y square minus 5ax minus 6ay plus 9a square equals to 0, in which case center is at 5a by 2 comma 3a, which is your option C. So if you put lambda as minus 40a by 9, then by simple calculation we can prove that this circle will be x square plus y square minus 205 a by 9x minus 174 ay by 9 plus 841 a square by 9 equals 0, and its center is at 205 by 18 and 174 divided by 9 into 2. Now this is 87 and this is 29 by 3. So it will be this 29a by 3. That means the other center, it is at B. So the correct options are B and C. Now it says find the angle of intersection of these circles. Now we know that the two circles, they intersect at this point P, which is a comma 5a, and Q, which is 4a comma a. Now we'll find slope of tangents at their point of intersection at P. Now we differentiate this first equation, we get 2x plus 2y dash minus 5a
minus 6a y dash equals 0. So here y dash will be 5a minus 2x upon 2y minus 6a. Now here x is a and y is 5a. So it will be this 3a and this is 4a. So value of m1 is 3 by 4. And if we differentiate the second one, we'll get 2x plus 2y y dash 205 a by 9 minus 174 a by 9 y dash equals 0. Then here y dash will be 2x minus 205 a by 9 upon 174 a by 9 minus 2y. Now again we'll put x as a and y as 5a. So it will be 2a minus 205 by 9a, and here it is 174a by 9 minus 10a. Now this is minus 187a, and here it is 84a. Now we can find angle of intersection. Now this angle of intersection tan theta will be m1 minus m2. So it will be this 3 by 4 plus 187 by 84 upon 1 minus 3 by 4 into 187 by 84. Now this is 1000 upon 225. Now this is 40 upon 9. So this angle will be tan inverse 40 upon 9. And that's your option B. Now this third one is, if C1, C2 are centers of these circles, then area of triangle OC1, C2. Now we know that area of triangle, it is given by 1 by 2, small sign, 0, 0, 1, and the two centers, they are at 5a by 2, 3a1 and 205 a by 18, 29 a by 3 and 1. So it will be this 1 by 2, and it is 5 into 29 by 6 a square minus 205 into 3 upon 18a square. Now this is 6, so it will be 5a square, and that's your option B. So answer to this question is BC for this first one, second is B, and third is also B. और छठा है इसमें फैमिली ऑफ सर्कल्स touching a line at a given point. अब यहां पे हमको सिर्फ एक लाइन दिया है जो कि है L इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट दिया है जो कि है x1 y1 जो इस लाइन पे लाई करता है. अब हमको वो सारे सर्कल्स का इक्वेशन बताना है जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करेंगे. तो इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे हमारे पास. अब एक कंडीशन जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सर्कल है और लाइन है तो वहां से हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिख सकते हैं s प्लस लेमडा L इक्वल्स टू 0 से. अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लाइन तो है लेकिन सर्कल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे
ये जो पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट पे एक सर्कल मानेंगे और वो सर्कल हम एक पॉइंट सर्कल मानेंगे। तो पॉइंट सर्कल वो सर्कल है जिसका रेडियस 0 है। तो यहां पे जो हमारा s प्लस लेमडा l इक्वल्स टू 0 में s आएगा, वो हमारे एक पॉइंट सर्कल आएगा। तो उसको हम लिखेंगे x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर और प्लस लेमडा l इक्वल्स टू 0, जो भी आपको लाइन का इक्वेशन दिया है। तो जैसे लाइन का इक्वेशन है सपोज lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लेमडा lx प्लस my प्लस n इक्वल 0। और ये है आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। Now the question, this line, it is tangent to this circle s equals to 0 at 1, 1, and if radius of circle is root 13, find the equation of circle. Now there are many ways to solve this question, and one of the ways is system of circles. So this point is 1, 1. We can write equation of family of circles touching this line at this point. So it will be given by this point circle, which is x minus 1 square plus y minus 1 square plus lambda, and L, equation of this line is 2x minus 3y plus 1 equals 0. So it will be this 2x minus 3y plus 1 equals 0. So it will be this x square plus y square minus 2x minus 2y plus 2 plus 2 lambda x minus 3 lambda y plus lambda equals 0. So this equation will be x square plus y square plus 2 lambda minus 1x minus 3 lambda plus 2y plus lambda plus 2 equals 0. Now center of this circle will be at 1 minus lambda and 3 lambda plus 2 by 2, and its radius will be under root of 1 minus lambda square plus 3 lambda plus 2 upon 2 whole square minus c, and minus c is minus lambda plus 2, and that will be equal to under root 13. Now we square it, we can write this as 4 lambda square plus 1 minus 2 lambda plus 9 lambda square plus 4 12 lambda minus 4 lambda minus 8 4 into 13. Now this is 13 lambda square. Now this is minus 8 minus 4, 12 lambda, lambda will cancel and constant term will also cancel. So that will be equal to 4 into 13. Now this 13 will cancel. So value of lambda is either plus 2 or minus 2. So we have two values of lambda, plus 2 and minus 2. Now if we take lambda is plus 2, then we can write this equation as x square plus y square plus 2x minus 8y plus 4 equals 0, and here the center will be minus 1 comma 4, and if we take lambda is minus 2, then this equation will be x square plus y square minus 6x plus 4y equals 0, in which case center is 3 comma minus 2. So these are the three ways to solve this question. अब रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड ही एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। अब कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स का डेफिनेशन ये है, अ सिस्टम ऑफ सर्कल इज सेड टू बी कोएक्सियल व्हेन दे हैव कॉमन रेडिकल एक्सिस। सो अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स is said to be
coaxial if they have a common radical axis. तो इसका मतलब कि अगर वो सिस्टम में से कोई पेयर उठाए तो हर पेयर का जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो सेम आएगा। अब जैसे सपोज हमारे पास दो सर्कल्स हैं एस और एस डैश और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं एस इक्वल्स टू 0 और एस डैश इक्वल्स टू 0 और इनका जो कॉमन कॉर्ड है वो उनका रेडिकल एक्सिस आएगा। अब हम फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालते हैं जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है और हमको पता है वो इक्वेशन आता है आपका एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल्स टू 0 से, जहां पे लैम्डा है आर -1। इस फैमिली ऑफ सर्कल्स में से आप कोई भी दो सर्कल ले लो, वो सर्कल हमेशा ये दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज ए और बी पे, और क्योंकि हमेशा ए और बी पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये केस में ये सारे ही सिस्टम ऑफ सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस जो आएगा वो यही लाइन आएगा। तो इस केस में ये जो सिस्टम ऑफ सर्कल्स है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल है। ऐसे ही अगर एक सर्कल है और लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से जो फैमिली बनता है उसके सारे सर्कल्स भी हमेशा ये दोनों पॉइंट से पास करेंगे, तो ये एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए भी ये आपका कॉमन रेडिकल एक्सिस आएगा। तो यानी कि ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स भी आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स होगा। इसी तरीके से सर्कल्स अगर लाइन को इंटरसेक्ट करता है और उनके कॉमन टेंजेंट पॉइंट पे हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, तो ये सारे सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली टच करेंगे और ये सारे सर्कल्स के लिए वापस से ये लाइन रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पे भी इक्वेशन हमारा था एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ सर्कल्स जिसमें हम एक पेयर चूज करते हैं और हर पेयर के लिए सेम रेडिकल एक्सिस आता है, तो उसको बोलेंगे ये आपका कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। अब ये जो तीनों केस हमने पढ़े हैं, यहां पे तो हम कोई भी दो सर्कल चूज करेंगे तो उन दो सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस सेम आएगा, लेकिन जनरली जब हम कोएक्सियल सिस्टम की बात करते हैं तो पेयर में सिस्टम की बात करते हैं। तो जैसे जो सबसे कॉमन केस है जो कोएक्सियल सिस्टम में पढ़ता है वो है सिस्टम ऑफ सर्कल्स with centers along x-axis and whose radical axis is along y-axis। तो इस सिस्टम ऑफ सर्कल्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स 0 से। तो इस तरह का हम कोई भी सर्कल ले लें जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, तो y एक्सिस का कोई भी पॉइंट से 0,y1, यहां से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा वो आएगा आपका √S1 और √S1 हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस c। अब क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस है तो ये इक्वेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो ये इक्वेशन पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, तो इसका मतलब ये c आपका फिक्स्ड हो गया। तो ये फैमिली में ये c फिक्स्ड है और ये g वेरी करेगा और ये g आपका पैरामीटर है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल 0, जहां पे सी फिक्स्ड है, वो एक सिस्टम ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका रेडिकल एक्सिस वाई एक्सिस होगा। अब ये सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स के लिए एक और चीज वो पूछता है लिमिट पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स। लिमिट पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सर्कल। अब अगर ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स को देखते हैं तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा आपका माइनस जी कॉमा 0 पे, और इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा आपका अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अब इसमें अगर हम रेडियस को 0 पुट कर देते हैं तो हमको पॉइंट सर्कल मिलेंगे। तो अगर रेडियस को 0 कर दिए तो g का जो वैल्यू आएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी। तो ये जो दो पॉइंट सर्कल हैं जिनके सेंटर प्लस माइनस अंडर रूट सी कॉमा 0 पे है, इनको हम बोलते हैं ये है हमारा लिमिट पॉइंट या लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो अगर आपको कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स दिया है तो उसमें अगर आप ये कंडीशन डालते हैं कि रेडियस 0 होना चाहिए, तो वहां से वो पॉइंट सर्कल्स के जो सेंटर आएंगे उन सेंटर्स को बोलेंगे वो है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स। Now it says find the equation of the circle which passes through this point 1, 1 belonging to the system of coaxial circles that are tangent at 2, 2 to the locus of point of intersection of mutually perpendicular tangents to this circle. Now we know that for this circle, the locus of point of intersection of mutually perpendicular tangents is basically its director circle. So equation of this director circle will be this x square plus y square equals 8. Now we have to find equation of a circle which passes through the point 1, 1 and which touches this circle at 2, 2, and this circle is x square plus y square equals 8. Now what we'll do is we'll find equation of tangent to this circle x square plus y square equals to 8 at this point 2, 2, and we know that this equation is given by t equals 0, so it will be this 2x plus 2y equals 8, or we can simply write x plus y equals 4. Now we have this line and this point. So what we'll do is we'll first write equation of family of all the circles which touch this line at 2, 2, and we know that this equation is given by x minus 2 square plus y minus 2 square plus lambda L equals 0, where L is equation of this line, which in this case is x plus y minus 4 equals to 0. Now of all the circles, we need the circle which passes through the point 1, 1. So we'll put x as 1 and y as 1. So it will be this 1 plus 1, and here will be this lambda, and 1 plus 1 minus 4 equals 0. That means value of lambda is 1. Now if we put lambda as 1, we can write this equation as x square plus y square, and this is minus 4x plus x. So there will be minus 3x, and the same way will be minus 3y, and this is 4 plus 4, 8. 8 minus 4 is 4. So equation of this circle will be x square plus y square minus 3x minus 3y plus 4 equals 0. अच्छा, इसमें ये जो 13th केस था कि जहां पे हमने वो सर्कल निकाला था जो कि तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, ये तभी पॉसिबल है जब रेडिकल सेंटर इट लाइज outside the three circles.
तो जो आपका रेडिकल सेंटर है वो तीनों ही सर्कल के बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेडिकल सेंटर किसी भी सर्कल के अंदर चले गया तो वहां से आप फिर टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो वो केस में ये सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा सर्कल जो तीनों को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है वो तभी पॉसिबल है जब उनका रेडिकल सेंटर ये तीनों सर्कल से बाहर लाई करता है।